Lovely, sir. We are here again back with one more revision video, small video, whereby we'll be discussing about admission chapter and the types of adjustment that we are having for the assets related adjustments. Correct? So मैं नाम दे देता हूँ इसको. Number one, chapter का नाम लिख देते पहले यहाँ पे admission of a partner. Admission of a partner. I am taking care of all the adjustments which are related to assets only. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग liabilities का देखेंगे and then we are done. Let's take small extract of the balance sheet. Say for example, I'm having land and building. This is my asset side now. Amount is 1 lakh. I'm taking plant and machinery. I'm taking amount as 95,000. Random amounts ले रहा हूँ मैं. Furniture 1,20,000. Computer and printer 40,000. Daters less RDD. Daters is for 40,000 and RDD is 1,000. Will that be 39,000? It's an extract. That. Let's say one more bills receivable. 20,000. It's an extract of balance sheet. These are all the assets ka list that I'm having. I am taking adjustments one by one. What types of adjustment that can be asked in the examination? It's a list of that. Starting with the very first one, they are telling you, starting with the very simple one also. They are telling you that land is appreciated by 10%. Now, can I say the amount of land bidding is 1 lakh rupees? So 1 lakh ka 10%, is it 10,000? So if the value of land increases, you are going to add in the value of land at 10,000, and the second effect will be going in the revaluation account or profit and loss adjustment account on the debit side or credit side? Credit side. Why? Because it's an income, credit or incomes and gains. So here, the solution is the very first one, the amount. So 1 lakh multiply by 10%. Is it 10 upon 100? That is going to be 10,000. That's the amount. And the two effects will be land में add करना है, तो land account will be debited if I'm marking journal entry to profit loss adjustment account or revaluation account. 10,000. Correct? And add to land asset side पे profit loss adjustment account credit side. That's my effect. मैंने entry लिख दिया so that journal entry भी साथ साथ में cover हो जाए. The next one, they are telling you building is depreciated by 10%. Depreciated by 10%. अच्छा, this land and building को मुझे पूरा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, because in the balance sheet we are having. मैं short लिख रहा हूँ. Now the land is being depreciated by 10%, so amount is going to be the same, na? That is 10,000. Now the entry would be less from land and building and profit loss adjustment account debit side because it's an expense. It's a loss. So entry becomes profit and loss adjustment account debit to land and building account. And if you are making a ledger, so subtract from land and building on the asset side and P&L adjustment account debit side or revaluation, whatever account you are preparing. So profit and loss adjustment account debit 10,000 rupees. And this we can't write revaluation account debit. You can write now. If you are making revaluation account, they write revaluation. If you are making P&L adjustment account, write P&L adjustment. Both are same, they both are the same. If the question is specifically telling you to prepare this account, you can prepare. You have to prepare that account. But if the question is silent, you can prepare any account. Correct, sir?
Now let's come to a little trickier questions. They are telling you that furniture is found overvalued by 20%. So मतलब if furniture is 10,000, it is overvalued by 20%. So 100% should be the cost, and it should be valued at 100%. But we are valuing it at 100 plus 20% extra. 20% or minus for it. Very good. So here, how are you going to do it? Just have a look at it. Do not make a mistake of doing it directly. Okay. The cost that should have been recorded plus what you have overvalued is equal to the book value that you have been seeing in the question. So it should be 100. You are showing 20% extra. There is 20 more. So you are showing how much? 120. मुझे दिखाना चाहिए था 100. मैंने दिखाया कितना? 20% extra. मतलब मैं दिखा कितना रहा हूँ? 120 दिखा रहा हूँ यार. तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? अभी I have an equation. अभी खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आओ. If my book value is 120, तो मुझे जो ओवर वैल्यू दिख रहा है, ओवर वैल्यूड अमाउंट, इज इट 20? Correct ना? Now if my furniture का amount in the question is said to be 1,20,000, what will be my overvalued amount? So if this is 1,20,000, if I cross multiply, I'm going to get the answer 20,000. Simple है calculation. How am I going to do this calculation? Into 20 divided by 120. Simple. खाली 0 कट गया. इसके लिए मैंने क्वेश्चन एंड अमाउंट्स भी बहुत बेसिक रखा है. अगर अमाउंट कुछ दूसरा होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा आंसर ले आते. Now the overvalued amount is 20, so I have to bring it to the original value. I should bring it to the cost price. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Less from the asset. I am going to subtract from the asset and profit and loss adjustment account debit side. So can I say if the asset is reduced and the profit loss adjustment account is debited, the entry becomes P&L adjustment account debit to furniture account. P&L adjustment account debit to asset. Asset का नाम furniture है यहाँ पे, to furniture account. You have to excuse my handwriting because मेरे को फटाफट लिखना. I can cover more questions. What are the effects? Less from furniture, P&L adjustment account, debit side. Too good यार. चलो. I am telling you that plant is found undervalued. तो उल्टा तो प्लस करेंगे. अरे झकास हो तुम भाई. Let's say 5%. By 5%. Means I should value it at 100%, but I am showing 5% less. अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर है ना बच्चे लोग गलती किसमें करते हैं मालूम है? In the calculation, cost minus undervalued amount, that gives me the book value, which is there. So I should show it at 100%, but I am showing 5% less. See, the main reason of me taking 100% every time, because I do not have to like calculate the percentage afterwards. If I take 100, the percent will be that only. So this becomes 95. Now, chalo. If the book value is 95, my undervalued amount is 5. So if my book value in the question is 95,000, so what will be this amount? Chalo, I need not make any calculations. Directly amount लिख दूं मैं फटाफट से. कितना आएगा इसका आंसर? 5,000. कैसे किया मैंने? 95,000 multiply by 5 divided by 95 will give me 5,000. 95 gets cancelled. 0 हटा दे. Very good. So now plant is found overvalued, right? Undervalued. आपको इसका amount सही करने के लिए add 5,000. Correct now? So here you're going to add in the value of plant and machinery. So plant machinery debit to P&L. अरे lovely हो तुम. And profit loss adjustment account के credit side पे जाएगा. बच्चे आपका मैं जर्नल भी कवर कर रहा हूँ या आपका मैं लेजर का भी पोस्टिंग कवर कर रहा हूँ. Too good यार, too good.
Next, if in question they're telling you that computer is to be under valued by 10%, तो यहाँ पे ना ये जो इंग्लिश है ना वो तो ध्यान रखना, या टेलिंग मी इज टू बी ना मींस दैट, हाँ मतलब आपको उसको रीवैल्यू करना है, यू हैव टू सबट्रैक्ट द अमाउंट। मतलब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर कितना दिया, 40,000 दिया है, सो मुझे यही 40,000 में से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इनफैक्ट, है ना। खाली घुमाने की कोशिश कर रहा है बट घुमा नहीं पाएगा अपने को। व्हाट यू ऑल मेक मिस्टेक्स, यू नो, कि अरे यार अंडर वैल्यू, चलो वो फॉर्मूला लगा देते हैं, बट देयर इज नो नीड फॉर यू टू। So here the amount is 40,000. 40,000 multiplied by 10%. If I'm not wrong, it is 4,000. And what will be the entry less from computer and profit loss adjustment account debit side? So the entry becomes profit loss adjustment account debit to for the to computer account. ये नहीं समझा? Simple लग रहा है अभी चीजें अपने को? Yes. देखो मैं कितना गधा हूँ यहाँ पे, 4,000 की जगह पे 10,000 लिख दिया। बचे एनी प्रॉब्लम? लवली हो तुम। नाउ डेटास, अच्छा ये बहुत मस्त है, इसमें 4 से 5 एडजस्टमेंट्स आते हैं डेटास के ऊपर, मेरा फेवरेट है। डेटास में अपने को बोला है 40,000 लेस आरडीडी, अपने को बोल दिया है 1,000, 39,000। अभी क्या बोलेगा एडजस्टमेंट नंबर 1, क्या बोलेगा मालूम है? कि आरडीडी इज मेंटेन्ड एट, आरडीडी इज maintained at 5%. What does this mean? Okay, my RD should be calculated at 5%. So if I'm not wrong, 40,000, this is a solution, multiply by 5%, is it 2,000? 4 5 20, हाँ है ना? So 5 upon 100, 100 0 0 cancel, 4 5 are 20, 0 0 to 2,000. So my value should be 2,000. Already I am having RDD of 1,000. So can I say I'll have to raise or I'll have to provide one more 1,000? नहीं समझा? मतलब मेरे पास में RDD to be created, जो अपने को क्रिएट करना है, is what? 1,000 only. 2,000, जिसमें से 1,000 तो पहले से ही है मेरे पास भाई, है ना। चलो इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम हैविंग दिस 1,000 एज एन आंसर, क्रिएशन करना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं? लेस फ्रॉम डेटर्स, आरडीडी बोल के, एडिशनल आरडीडी, करेक्ट है, कितना? 1,000। एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड पे, करेक्ट ना? एकदम झकास हो तुम यार। अच्छा थोड़ा उल्टा ले ले हम लोग केस को, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? आरडीडी इज मेंटेन्ड एट 1%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर 1% मुझे वो बोल रहा है करने के लिए, तो इट विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1%, ये आंसर हो यहाँ पे, into 1% is going to be 400। 0 0 कैच कैंसल ना ब्रो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास में 1,000 का आरडीडी क्रिएटेड है पहले से, ये देखो ना यहाँ पे, मैंने 1,000 आरडीडी क्रिएट करके रख दिया है पहले, बट मुझे कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 400। तो मेरे पास एक्सेस कितना हो गया? 600। मतलब मम्मी ने मुझे बोला, इसको बोलते हैं एक्सेस आरडीडी। मम्मी ने मुझे बोला था कि आर्यन अपने वॉलेट में से तू 400 रुपया निकाल ले। तुम भाई साहब ने कितना निकाल लिए? 1,000 रुपया। कि मम्मी को क्या ही पता चलेगा, चप्पल जूते पड़ेंगे बेटा, है ना। तो आपने कितना एक्स्ट्रा निकाल लिया? 600 निकाल लिया। तभी आपको 600 क्या करना पड़ेगा? डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझा? सो यहाँ पे इफेक्ट्स क्या आ जाएगा सर मालूम है? add to debtors how much? 600। and profit and loss adjustment account credit side 600। अच्छा मैंने इसका लॉजिक आपको शायद स्टार्टिंग में दिया, मुझे ध्यान नहीं है। आप ध्यान में रखो कि P&L adjustment अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। whenever
you are having a profit, you will be crediting P&L adjustment account, and whenever you're having a loss, you're going to debit the P&L adjustment account. Yes, correct है. तो आप ये सोचो ना कि एसेट का वैल्यू बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट है, एसेट का वैल्यू कम हुआ तो हमारा लॉस है. So if there is an increase in the P&L, if there is an increase in an asset, it's a profit. If there is a decrease in an asset, it's a loss. खत्म. आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखो ना तो भी आपका आंसर राइट आ जाएगा. बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? याद रह पाएगा आपको? वेरी गुड. नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लेता मैं. अगर आपको सिर्फ डेटास दिया है एंड आपको बोला है कि व्हाट इज योर आरडीडी का अमाउंट, तो डायरेक्टली यू मल्टीप्लाई, गेट द आंसर, सब्ट्रैक्ट, खत्म. अच्छा, इफ इन क्वेश्चन दे टेलिंग यू आरडीडी इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसा बोल दिया है या आपको बोल दिया ऑल डेटास आर गुड, नहीं करना है भाई. बताता हूँ ना मैं तुमको. ऑल डेटास आर कंसिडर्ड गुड या आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. तो क्या करोगे तुम इसका भाई? अगर ऐसा होगा ना तो क्या करना पड़ेगा मालूम है तुमको? जो 1000 आपने पहले से क्रिएट करके रख दिया ना, इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. निकालना पड़ेगा. तो पता है क्या करोगे तुम? ऐड कर दोगे फिर से डेटास के अंदर जो आपने आरडीडी क्रिएट किया था, माइनस किया था ना आपने आरडीडी 1000, वो पूरा ऐड कर. ये आपका सोल्यूशन है. एंड आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1000. इफ दे आर टेलिंग यू दैट आरडीडी इज considered useless or it's not required and all the data are good. पक्की बात है. ये 1000 रुपए कहाँ से आया? यहाँ पे जो आपने पहले से रखा है वो वाला. हाँ. कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपके पास में बिल्स रिसीवेबल दिया है यहाँ पे 20,000. आपको बोलता है कि बिल्स रिसीवेबल 20,000 में से 5,000 गॉट डिसऑनर्ड, चला गया. हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को लेस करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल में से, एंड वही एग्जैक्ट सेम अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटर में ऐड करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज मुझे अगर बिल का पैसा नहीं मिला है, दे आर डिसऑनर्ड, दे आर नॉट पेइंग मी द अमाउंट. अपन ने पूरा चैप्टर किया बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर हम लोग को बिल का पैसा नहीं मिलता है तो मैं बिल को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा. एंड मेरा फिर से वो बंदा डेटर बन जाएगा तो डेटर में ऐड कर दूंगा. एंट्री बिकम डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नहीं समझा? पक्का ना? जबरदस्त हो तुम. सो दैट्स द types of transaction that we can have for all the assets. परफेक्ट है. चलो अभी अपन बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में.